Yesterday I asked you to do some tasks. What were they? क्या करने को दिया था कल मैंने? बताइए. Research on factors affecting stock market and macroeconomics. So just a second. I will plug in my head. Yeah, I had asked you to go through the macroeconomic indicators, right? Yes, ma'am. देखा आपने? What did you understand? कौन से देखे? Tell me what's the difference between GDP and GNP? Or what did you study? Tell me that. यही मैम क्लास करी थी और नहीं पढ़ा था आगे. Okay, I appreciate the honest answer. Anybody else? किसी ने देखा था? Okay, so I believe so if you have not gone through it, so please do it. Okay. So from the next session, I expect you, because you will be having the 1 week's time. Okay. So kindly go through each and every macroeconomic indicator which is present in India. अब आप नॉन फार्म पेरोल्स मत पढ़ लेना बिकॉज वो भी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? सो स्टडी फ्रॉम द इंडियाज पर्सपेक्टिव एंड ट्राई टू हैव अ हैंग ऑफ इट कि हाँ कैसे क्या चीजें हो रही हैं. We will be having a detailed discussion on each and every macroeconomic indicator. So I don't want you to be, completely new when we reach that chapter. Okay, that's why I'm asking you to just abhi se start kar do is pe read karna. Okay, also did you start reading the annual report of the company which you guys have chosen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा करके साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है? बिकॉज वो एक दिन में बैठ के होने वाली नहीं है. So if you have to read line by line and if you have to understand things, daily read 4-5 pages तो complete हो जाएगा. Okay. Any other task? मैंने कुछ और दिया था क्या आपको? Ma'am, we have to see historical stock prices of NSE. Yes, and I had asked you to explore NSE BSC's website, right? Yes, This is ma'am. also a continuous process. Okay, रोज आप just go to any of the tab and see something and explore it. Okay, because this is not definite syllabus which you can do. Exploration is all. The more you spend time on these websites, the more you will get to learn. Okay. So now we will start from the second unit, that is the securities market. Yesterday we discussed what is the security market. Okay. Now we need to understand what all players are there in the securities market. So security, okay, सबसे पहले what is security? Okay, so here as per the SCRA, that is the Securities Contracts and Regulation Act, these 9 items are defined as the security. अब इसमें क्या क्या आता है? Stocks, bonds, debentures. Anybody, what's the difference between bond and debenture? Anybody want to make any guess? No? Bonds are about government and debentures are issued by private companies. Debentures are loan to the company. No. The first one, see, I can't see your names, okay? So the earlier person said very correctly that the bonds are always issued by the government, okay? So in India, they are issued by either the state government or the central government. मैम पर कॉर्पोरेट बॉन्ड तो कंपनी भी इशू करती है ना? हाँ, उसको डिबेंचर बोलते हैं, मैं वही बोल रही थी. Debentures are always issued by the companies, not by the government. Okay, they are the same thing. They are the debt taking instruments only, either by the government or by the companies. The only difference is who is issuing it. If the issuing authority is a private player, then we would name it as a debenture,
or if it's a government then it's a bond, but generally in usual practice सब लोग bonds ही बोलते हैं, nobody differentiates. Okay. Yeah. Then mutual fund units, international borrowing bonds also are there. We will study, बहुत सारे types के bonds आएंगे अपने पास. Okay. Now, who all are the different parties in this financing circle? Okay, so you need to understand there is a complete cycle. For example, you have 1 lakh of excess money with you. Okay, and there is another person who wants to borrow money from the bank for, let's say, car loan. Okay, he wants to take car loan from the bank. So now how will the transaction will take place? You have access of money. Okay, so what you will think, okay, let me put this money into the bank or any of the security and get or earn interest on it, right? So आप क्या करोगे, आप पैसे डिपॉजिट करोगे. सपोज यू मेड एन फिक्स डिपॉजिट. ओके, सो आपको XYZ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाला कंफर्म करेगा, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट. On the other hand, the one who needs the car loan will be borrowing the money at ABC percentage. Okay, so this is the cycle between the ones who have surplus funds and the one who are in deficit of the funds. Okay, so there is a flow, right? So surplus Yes, ma'am. income units and the deficit income units. अब surplus किस के पास होता है? Households means people like you and me, the business firms, government, foreign players. Okay, so सब these सेम ही players, है दोनों. हाँ, क्योंकि यही लोग लेते भी हैं and यही लोग देते भी हैं if they have the excess of money. Now there are two ways of financing, the direct financing or indirect financing. In the case of indirect financing, there is an financial intermediary in between. When I say the financial intermediary, it means there is some financial institution in between, right? For example, exchange. Okay, so when you put your money in the stock market, आप directly companies, let's say Dabur, आप directly Dabur India को पैसा नहीं दे रहे हो और Dabur India आपको directly shares नहीं दे रहा है. There is an exchange in between which allows the exchange of funds as well as the shares between both the parties, right? But if you go to the bank and say, okay, I want to borrow money, so आप और बैंक सिर्फ दो ही पार्टी हो, बीच में और कोई इंटरमीडियरी नहीं है, right? So that is the direct financing, and if it is routed through a financial intermediary, it is known as indirect financing. Indirect financing. Hope this is clear. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So you can just go through what all things are included. Okay. Now we will understand one by one the terminologies. Okay. So the first one is equity shares. So when I say the share, what do you mean by share? क्या होता है शेयर? आप बोलते हो कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, इसका मतलब क्या है? Ma'am, ownership of the company. We have some part of ownership of a company. Yes, yes. So how Size do in we? ownership. Sorry. Size in ownership. Like 10 shares. That much ownership. Yes, yes. So for example, you have 50,000 shares, okay, and in total there are 2 lakhs of outstanding shares by that company. So what is your ownership? 50,000 divided by 2 lakhs. 25%. 1/4. Okay. So 1/4 will be your ownership in that company. So similarly, number of shares divided by total number of shares outstanding. Now you tell me, from where will you get the total Ma'am. number of shares outstanding in the annual report? Yes. मैम जैसे एक कंपनी है उसकी जो टोटल वैल्यू 10 लाख है, तो उसमें ये होता है ना कि कुछ वो जैसे केवल 3 लाख या 4 लाख का ही शेयर इशू कर सकती है, और उसी 3-4 लाख में से मैंने 1/4 ओन किया हुआ है, तो मतलब मैं वो 4 लाख का 1/4 ओन करूंगा ना, मतलब उतनी कंपनी का जितना शेयर, या Yes, पूरे yes. 10 लाख का? No. जितना पब्लिक के पास है out of that. अच्छा. Promoter वाला we don't include. Okay. Yes. Now tell me, for your respective But ma'am, companies. sometimes companies sell more shares.
like they issue bonus shares, but they while register company, they have fixed number of shares or to issue, na? See, at a point of time हमेशा फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स ही होंगे. अगर बोनस भी वो दे रही है तो बोनस इशू करने के बाद, सपोज पहले XYZ थे, बोनस कुछ इशू हुए, उसके बाद ABC हो गए टोटल, राइट. बट एज ऑन डेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, जितने मार्केट में हैं, आप वही फिगर लोगे हमेशा, राइट. मुझे एक क्वेश्चन था कि मैम, हम जब रजिस्टर करते हैं कंपनी, तो कि हम 10% हमारी कंपनी के शेयर इशू करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के 10,000 है. हाँ, ओनरशिप प्लस so that is equivalent to the 10%. यस. बट बाद में हम थोड़े 1-2 साल 5 साल के बाद देखते कि कंपनी का कैपिटल जैसे रेज होता है, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स भी रेज होते हैं. तो हमें रजिस्टर करने के बाद कुछ तो चेंजेस करने होते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स में? No, no, तो no, no. मैम इस See, तरह तो हमारी ओनरशिप कम होती जाएगी ना, जब बोनस शेयर और नए शेयर इशू होंगे. yes, if the company issues new share, your percentage of holding in the company decreases. Decreases. Yes, yes. And all these come under the corporate action: bonus or dividend or buyback, split, consolidation. हम study करेंगे. Please mute yourself if you are not speaking. Okay. Right. So these corporate actions के बाद there might be changes in the total number of shares outstanding. Okay. So but we have to take as on date the total number of shares which are there in the market. Okay, अब मुझे annual report में से बताइए. Total number of outstanding shares means it includes the promoter shares as well, na? Include which shares? Promoter share. No. Promoter share is not into the public. No, only the number of outstanding shares. Meaning the total share issued by the company. Total number of shares issued by the company, right? Now you have to take into consideration. Okay, for example, उन्होंने अपना 30% पब्लिक को दिया है. Okay, so that 30% will be equivalent to the total number of shares outstanding, right? It depends. For example, LIC का IPO आ रहा है, let's say 10% of 10% of the holding would be dissolved. It means, for example, they are issuing 10,000 shares. So 10,000 shares is equivalent to the 10% of the company's wealth. Okay. So the total number of outstanding shares does not include promoter shares. Yes. प्रमोटर शेयर तो इशू ही नहीं हुए ना अभी मार्केट में, उसको कैसे इंक्लूड कर लोगे? इशूड है, बट उनके पास है, उनके डीमैट अकाउंट में है. इशूड तो है ही तभी. See, for that पब्लिकली अवेलेबल नहीं ना. You need to check in the annual report how much they have. See, every information is there in the annual report. अगर promoter के पास share holding भी है, so it will be mentioned over there, right? So few companies करती हैं, कुछ companies नहीं भी करती हैं. So as such, see, in the finance there is no as such fixed rule. I would say you need to check company to company. किसी एक company का अगर PE ज्यादा है, किसी एक company का कम है, that doesn't mean वो company खराब हो जाती है. You need to see उसके peers या उस sector के companies कैसे behave कर रही हैं. So there is no fixed rule, right? आप जो कह रहे हो प्रमोटर होल्डिंग वाला वैसे तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी जस्ट टेक व्हाटएवर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर इन द पब्लिक. बट यस, आई वोंट डिनाई द फैक्ट दैट प्रमोटर्स के पास भी शेयर्स होते हैं. सो यू नीड टू चेक. ओके, आपकी कंपनी का आपने देखा कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग? You need to tell me where you will get that figure. I'm not interested in the total number of shares, but how will you look for it? Where will you get that? Tell me that. I'm giving you 2 minutes to find out. Yes. मेरे इसमें और टिकट टेप. One by one. टिकट टेप पे मिल जाएगा. टिकट टेप पे मिल जाएगा, ये spinner.com पे मिल जाएगा. No. I want it from the annual report.
I'm not asking from any other source. मैम यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न करके फॉर्म नंबर MGT 9 ऐसा करके एक सेक्शन है जो रिपोर्ट मैं देख रही हूँ जाइडस वेलनेस का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैटेगरी वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है उसमें. Yes, under the shareholding pattern, सबसे हाँ. last में होगा there would be total number of shares outstanding. Ma'am, we can also get this through Share held by custodians and everything. One by one. Sorry, ma'am, I'm late joining. Can you send a link? Sorry. I'm late joining. I don't have a annual report. Can you share a link? Okay, no, I have not shared it. Just a second. I have not shared it with everybody. So it's like you need to select one company from the FMCG sector. Okay, so yesterday everybody selected one company and they downloaded the annual report of their respective companies. So you can also take any company, just download the latest annual report, and every activity we will be doing on that company. I mean, whatever you choose. So you need to download it from the company's website. Because last session was not attended, so I don't know. No issue. Now you can download. Yes, ma'am. Yeah. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, we can directly take it from balance sheet now, from issued capital. No, not from the balance sheet. All right, ma'am. Yeah. मैम जब वही चीज है तो मैम टिकर टेप चले या बैलेंस शीट चले या कुछ ले तो एक ही बात तो है. See, I want you to be thorough with the annual report. ये websites कभी-कभी updated नहीं भी होती हैं. You might get different results. अच्छा. So our focus is not to learn screener or ticker tape. Our focus is to understand what the company is providing to us. मैम बैलेंस शीट तो एनुअल रिपोर्ट के साथ ही आती है ना मैम? Yeah, I understand it. You can get it from there, but I want you to understand what is the ideal place to look for. For example, the shareholding pattern, there must be a column in the annual report, right? Okay. So you should be aware कि हाँ ऐसा कोई column भी होता है जहाँ पे we can see. कल को कोई पूछ ले डोमेस्टिक का कितना है, फॉरेन का कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, पब्लिक के पास कितनी है, तो ये तो बैलेंस शीट में आपको नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ देखोगे? Right, at that time you should know कि हाँ where to look for which data. Yes, ma'am. Okay, ma'am. See, again I am saying my focus won't be just to clear this exam. मैं वैसे कभी नहीं पढ़ाती हूँ. I want you to understand practical things more than just clearing the exam. Exam is very simple. Just MCQ है. You need to just go through this PDF and आपको समझ में आ जाएगा. Right? Yes, ma'am. Okay. So these equity shares are issued by the companies. कौन investors होते हैं? People like you and me and the institutions. Institutions means for example ICICI लगा रहा है या कोई एक corporate दूसरे corporate में लगा रहा है पैसा, right? So these are the institutional players. Now in the individuals we have two types of players, retail and HNI, that is the high net worth individuals. Retail means people like you and me, and HNI has a particular limit. If you are investing more than that, you would be considered as an HNI. So you need to tell me what's that limit to become that HNI. Tell me. It's in crores, no, ma'am. The individual which have capital more than 2 crores. 2 crores? Yeah. SNI more than 2 lakhs. Yes. अरे मैम 2 करोड़ दिखा रहा था. 2 crore कैसे दिखाएगा? लिखा है कि those people who have more than 2 crores investable surplus are considered high net worth individual. कहाँ पे देख रहे हैं आप? medium.com. I guess 2 crore वाला सही है आपका. It's 2 crore. Yeah. ठीक है. Next we have bonds, debentures and notes. अभी हमने difference तो देख लिया है.
Okay, now there are three types of basic debentures: fully convertible, non-convertible, and partially convertible. Okay, so when I say fully convertible debenture, what do I mean? Fully convertible means, okay, so there is a bond and there would be terms and conditions written behind the debenture. Okay, that after XYZ years, let's say the maturity of the debenture is 5 years. Okay, after let's say 3 years, this debenture would be would be for sure, it would be converted into the equity equivalent to that amount which would be there at that point of time, that is after the completion of 3 years. उसके इक्विवेलेंट जितने भी उस कंपनी के आपको शेयर्स मिल सकते हैं, you will get the equity, right? It means your bond will be converted into the equity. Non-convertible means they have no provision of converting into the equity. And partially convertible debenture means, let's say x is to y का उन्होंने रेशियो दे दिया कि 60% of the amount will be continued as the bond and 40% of the amount would be converted into the equity, right? So जो भी उनसे terms and conditions लिखी है, let's say after completion of 3 years or 4 years, ये होता है हमेशा maturity के पहले. So there would be a clause, right? कि आपका 60% of the amount would continue under the scheme of bond and 40% of the amount would be converted into the stocks or the equity for that same company. So in this way, you can demarcate the debentures into the three categories. Fully convertible, ki 100% paisa would be converted into the equity of that respective company, partially convertible and non-convertible. Making sense to everybody? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No? मैम डिवेंचर से I कोई have a अमाउंट question. होता है क्या, कितने मतलब इन्वेस्ट करने हैं ऐसा कुछ? Amount means fixed amount, ऐसा कुछ आप पूछ हाँ रहे हो? ऐसे कुछ, हाँ. No, there is no as such fixed amount. I mean, it will depend upon the one who is issuing the bond. Okay, agar they have come up with a criteria, then it would be there. So it all depends the issuing company, what terms and conditions they are coming up with. So हर Ma'am, कंपनी I के have a डिवेंचर्स question. होते ही है? हर कंपनी का डिवेंचर्स होते ही है, जिनकी भी सिक्योरिटीज है मार्केट में उनके डिवेंचर्स होते ही है क्या? So ऐसा है? debenture is like a loan. Okay, you are issuing bonds to, for example, I am let's say Reliance. Okay, I have issued debenture. It means I am giving you the bond and you are giving me the money. So in a way, I have borrowed money from you. Likewise, I would have borrowed money from the bank, right? So these are the debt instruments. Okay. So if the company needs debt or if the company needs money from the market, only then they will be issuing the debentures. Okay. If they are self-sufficient, then they won't be. Okay. Ma'am, these borrowers are financial institutions or it can be retail as well? No. Financial institutions and corporates. Okay. So, ma'am, हम लोग को ये सब काम कब आता है? Like, when do they actually use this thing? Like, what scenario? Okay. So, for example, okay, everybody. Okay, are you guys? I mean, do you guys watch the documentaries or series kind of thing? So there is one, 3 episodes on the Netflix, Bad Boys Billionaire, right? So उसमें एक केस है विजय माल्या का, okay? So if you go and watch that, so विजय माल्या के केस में, okay, so विजय माल्या के केस में क्या हुआ था कि they knew, okay, all the finance and the internal team was telling Vijay Malia that we have borrowed excess of amount, we have borrowed excess of our limits, I mean excess of the repaying limits, and so the bank also knew this case. They have borrowed too much and now if we lend them more it would be NPA to our accounts. So then at that time what did the Kingfisher company did was they came up with the debentures. It means
जब बैंक आपको पैसा नहीं देता है बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी इश्यूज और एनी अदर इश्यूज, बैंक को लगता है तो बैंक पैसा आपको नहीं देगा, तो कहाँ से आप बोरो करोगे? एंड द सेकेंड थिंग, यू डोंट वांट टू लिस्ट योरसेल्फ ऑन द एक्सचेंज, then the only option which the companies have is to issue the debenture. Because debenture में क्या होगा, only the risk taking people will put in their money and all the parameters will be clearly mentioned, the risk return या जो भी है. So if the people like you and me or other institutions are willing to lend them money, only those will be lending the money and they will be borrowing in the case they are not able to take it from the other sources. So this is like सेवियर काइंड ऑफ थिंग. अगर बैंक नहीं दे रहा है, इक्विटी लॉन्च नहीं करनी है, तो आप कैसे पैसा कंपनी उठाएगी? कंपनी तो डिबेंचर्स इश्यू करेगी. ओके मैम. एंड इनकी क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग्स होती है, राइट? फॉर एग्जांपल AAA बॉन्ड्स, AA बॉन्ड्स, बी, ट्रिपल बी, डी, जंक बॉन्ड्स. Everybody has the idea what happened in 2008 financial crisis. Yes ma'am. No, ma'am. Lehman Brothers. Yes. So no, not now. So take it down as a task, since everybody is not on the same page. You need to read about the 2008 financial crisis. इस केस में क्या क्या हुआ था, and then we will discuss. There's a movie on Netflix, A Big Shot. Yeah. There are so many documentaries on Netflix related to the financial breakdowns. बिलियंस. Sorry. मैम एक और है ना सीरीज है बिलियंस. हाँ रोग हाँ, ट्रेड हाँ. भी है, निक लीसन का, हाउ ही वो जो ट्रेड को कैसे करता है. वुल्फ ऑफ द वॉल Yes. स्ट्रीट. बहुत सारी है. So you should be watching all these movies in order to get the idea, you know. I mean, see, this is nothing but taking advantage of the loopholes in the financial system. Some people have done wrong, but look at the case of ये 1992 में क्या हुआ था? हर्षद मेहता. हर्षद मेहता मेरे हिसाब से he didn't do anything wrong. He just took the मैम वो advantage तो of the जैसे loopholes in the आर्बिट्राज वाला था ना, बीएससी Yeah. और एनएससी वाला, उसी तरह उसने किया था. वो तो Yes. गया था. So वही है, he didn't do anything wrong. So if the system is not in place, then anybody would take that advantage, no? लूप होल का बस फायदा उठा लिया तो उन लोग ने जबरदस्ती का उसको. Now come to the warrants. What do you understand by warrants? Anybody? Yes? No idea? Okay, open source. Read about it and tell me. Madam, one question about debentures. Yes. Can a company, all the companies can issue debentures, or only the listed companies can issue the debentures? No. Non-listed companies can also issue. And debentures can also be listed and non-listed, no? Debentures, bonds listed. I mean, they are transferable, but उनमें ऐसे listing ऐसे कुछ नहीं होता है. They are not listed on exchange. आपने अभी कहा ना कि जैसे पता चल जाता है वो A++ वाले हैं. Sorry? But they can be traded, no? हाँ, they can be. Yes. So ma'am, if they can be traded, though, they should be listed, right? See, for example, ऐसा कौन सा bond है? Okay, you tell me. Search it on the open source and tell me. Hello. As far as I remember, yes. Am I audible? Yes. Hi, Rajnikant this side. I'm trying to ask one question, but my voice was not audible. Okay. Okay. So I just want to know कि कंपनी कब डिसाइड करती है कि उसको इक्विटी करना है या फिर वो डिबेंचर के लिए जाना चाहती है. Let's say a company XYZ has issued a equity of 10%, right? फिर उसको कुछ पैसे उठाने हैं, तो वो इक्विटी मतलब फिर से लॉन्च करेगी या फिर आई मीन वो डिवेंचर करेगी? See, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है. Again, I am saying it depends upon the management what decision they take, looking at the risk return reward, right?
Agar if the cost of equity is higher than launching the or borrowing from the bank or launching the debentures, then why would they go for the equity? And in some cases, even if the cost is higher, but they want to get listed on the exchange, right? They want to be openly available to the public. तो उस केस में वो लोग करेंगे भी. So ऐसा कोई एक पैरामीटर नहीं होता है. They have to look at various factors, the what products they are into, what segment, the economics, business cycle. So that decision is completely based upon the management. बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं. मैम इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम मैम ये भी होता है. Yes, yes, yes. तो वो लोग यही तो करते हैं. They will look at the different parameters and देखेंगे कि what is that sweet spot of debt to equity ratio that the company should be maintaining. Yes. Ma'am, Yes. bonds of NHAI and Britannia, PPC, NTPC are all listed. Okay, okay. And private में कौन से हैं? Britannia is there. Private, like a parlay. but if they are private, so they cannot be traded, na ma'am, if they are not Yes. listed. Yes, yes. So generally, अभी एक SEBI का circular भी आया था. You can go through that circular also. These debentures are also now tradable and these they have to be listed. Earlier पहले क्या होता था जब in the initial 20s or in the 1990s वाले में they were privately available. If you buy it, then वो आपके पास ही रहेंगे. आप किसी और को नहीं दे सकते हो. You cannot get it liquidated, right? They were non-negotiable. Yes, yes. All right, ma'am. Yeah. So, okay, we were on warrants. Anybody? What are warrants? Warrant is generally Ma'am, warrant is an option given to equity shareholders, or given to holders that they want to buy equity shareholders or not. It's just an option. Yes, Then yes. note like that you can Right, buy right. after sometimes you can hold equity shares or you will be return your money and with interest. So they are like the Domino's coupons which you get. You remember पहले के जमाने में, पहले का जमाना नहीं यानी कि कुछ साल पहले ही आपके घर पे वो डोमिनोज के हाँ लीफलेट्स हाँ दे हाँ के जाते थे, राइट? और हाँ उसके हाँ. साइड में लिखा होता था दोज वर द कूपन्स दैट यू कैन यूज इट. अगर आप नहीं भी यूज करते हो तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं था कि यू हैव टू यूज इट, बट इफ यू यूज इट यू विल गेट बाय वन गेट वन और 20% discount or likewise. So these warrants are like that. These are the options given to you attached, and it's up to you whether you want to use it or not. There is no as such compulsion for you to, execute these warrants. Okay. So if this is an option, that means premium must be associated with this. Not in every case. Not exactly. No. Okay, then why should a company issue a warrant? I mean, उसका फायदा क्या होगा वारंट इशू करने का? See, अभी तो काफी टाइम से कंपनीज इशू नहीं कर रही हैं. ओके. सो अर्लियर क्या होता था, क्योंकि इतना सिक्योरिटीज मार्केट डेवलप्ड नहीं था ना. सो नाउ इट इज लाइक अगर आप किसी को नहीं भी बोल रहे हो बट दे विल कम एंड ट्रेड. सो भी लिक्विडिटी काफी बढ़ गई है. So in the initial years, in order to increase the liquidity to make their stock more tradable, so companies used to use such kind of gimmicks ki haan, at least people will buy, people will be more, they will trade more into the stock and there will be more liquidity, there would be more easy entry and exit kind of thing. So उस time में होता था. अभी तो काफी time से there no warrants have been issued. Okay, okay. मैम अगर एक लाइन में बोले वारंट्स क्या होते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग? एक लाइन में बोले, so these are like the coupons, I would say. Coupons आपको मिले हैं. So coupon is something which is optional, no? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, till the time being warrants are issued as an equity, till then they are treated as contingent liability or share capital. Share capital. Share capital. All right. Next we come to the indices. Okay. So index is like a basket.
Okay, so what do you mean by a basket? For example, let's say there is mix. Okay, we have a fruit basket, है ना, हर तरीके का फ्रूट होता है. Similarly, हर एक सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज आपने जब एक जगह एक साथ ले ली है, and basis of that, for example, we have Nifty 50. So from all the 23 sectors which are there, उसकी टॉप आपने companies ले ली, and you will make a basket, and you have named that basket which is present on the NSE as a Nifty 50 because it's a combination of top 50 companies from the 23 various sectors, right? Similarly, we have BSE, Sensex. It is a combination of top 30 companies, right? And there would be the representatives. Representatives kaise hue? Because they will represent each and every sector which is present on that. They will represent each and every companies which are from the different sectors, I would say. Okay, so now you tell me. मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक सेक्टर से 2-3 कंपनी हो. हाँ, obviously. So the top performing companies from those sectors. Okay, किसी का एक भी होगा, किसी की दो भी होंगे, किसी के तीन भी हैं. So you need to tell me what all companies are there in the Nifty 50 and Sensex. निफ्टी में क्या? बैंक 12 बैंक है निफ्टी में. हाँ, ऐसे एक एक करके मत बताइए. You make a list of it. Okay, you make a list of it and then you tell me. Or you can send it in the chat box so that everybody can go through it. And if there is any एक बार फिर से discrepancy, क्वेश्चन बोल दीजिए. बताना क्या है? you need to write down or you need to find out what all companies are there in Nifty 50 and what all companies are there in Sensex, that is the top 30 companies. वेबसाइट से डेटा उठाएंगे तो I would appreciate it. So आपको एक ही जगह पे लिस्ट नहीं मिल रही है क्या? मनी कंट्रोल पे मिल गई है. सॉरी, मनी कंट्रोल पे मिल गई है. मनी कंट्रोल पे हाँ, everywise Nifty 50, Nifty IT सब है, yes, but I don't know how to paste all these things. no, I just wanted you to reach there. हाँ, Now उसमें बहुत अच्छे से this सब is, दिया हुआ है. yeah, this is your task, है ना? In the whole week, what you need to do, you need to analyze it. What all different indices are there? See, this is the mix. This is the mix of indices. I'm sorry, mix of companies from all the different sectors are there. Now the sector specific indices are also there. Okay. So what you have to do is you have to go through what all companies are there. For example, Bank Nifty and the FMCG and the healthcare, automobile, right? Chemicals, textiles, metals, yes. So इनमें कौन-कौन से top performing companies है, you will get an idea by going through their specific sectoral indices, right? मैम यही करना है ना, इंडाइसेस में जो टॉप कंपनीज है उनको ग्रोथ थ्रू करना है. हाँ, yes. So that कल को अगर आपको बोलता है कि Jubilant Foods, it is there in the index of Nifty, FMCG. बट आपको पता तो होना चाहिए ना ये कंपनी है भी या नहीं है उसके अंदर. सो दैट आइडिया यू शुड हैव, राइट? एक तो मिक्स का ओवरऑल एंड देन ऑन द सेक्टोरल बेसिस यू हैव टू गो थ्रू. ओके मैम But एक ma'am, we क्वेश्चन है. cannot trade on the sectoral basis. Like we cannot trade in metal in indices. Yeah, I'm not asking you to trade. You just have that knowledge. You should know what all companies are there or not. मैम ये जितने स्क्रीन पे दिए हुए हैं इंडाइसेस, इन्हीं का देख लेंगे. नहीं, आप बीएससी की साइट पे जाइए, बहुत सारे इंडाइसेस मिलेंगे आपको. मैम अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मा का ही देखते हैं तो उसमें भी अगर आप सारे टॉप कंपनीज ले लोगे तो मतलब आप एक एक्चुअल पिक्चर तो फिर आप कैसे ले पाओगे, बिकॉज आपको सारे टॉप कंपनीज ले लिए तो छोटे छोटे कंपनीज भी तो होंगे. Yes. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट सी अगर पहले आपको टॉप कंपनीज ही नहीं पता है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप पे कैसे जंप करोगे, राइट? स्मॉल कैप को स्टडी करने के लिए एटलीस्ट स्मॉल कैप, प्रॉब्लम विद स्मॉल कैप्स इज दे आर वेरी वॉलेटाइल. सो वंस यू
Okay, सबसे पहले मुझे बताओ what's the difference between large cap, mid cap and small cap? मैम स्मॉल the कैप capital. 500 मार्केट कैप उसका 500 से ज्यादा होता है, तो फिर जिसका वो 5000 से कम होता है वो होती स्मॉल कैप, और जिनका 5000 से 20000 तक रहता है वो होती मिड कैप, और जिनका 20000 एंड अबव It रहता है has वो been changed, no? Now it is in the terms of number of companies. Yes, ma'am. ये वाला तो आप कितना साल पुराना डेटा बता रहे हो? चेंज Top हुआ 100 मतलब companies are under the large cap, 101 to 250 come under the mid अच्छा cap. अच्छा, वैसे भी, हाँ वैसे भी, मतलब 0 से 100, 1 से वैसे 100 भी तक। नहीं, this is the only way. Market cap वाला नहीं देखते हैं. अच्छा Yeah? ठीक है। Okay. So, yeah. Okay. ठीक है. अभी इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्लीज मत देखिएगा. ओके, यू हैव कंप्लीट डिफरेंट मॉड्यूल ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. एट दैट टाइम वी विल सी. नेक्स्ट वी कम टू द म्यूचुअल फंड यूनिट. तो क्या होता है म्यूचुअल फंड, बताएं मुझे. Pool of investments. Ma'am, it is a pool of investment invested in different sources, invested in certain portfolios. मैम म्यूचुअल फंड एक लिंक है हमारे और कंपनी या स्टॉक्स के बीच में, जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है उनमें. हम अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Yes, इन्वेस्ट yes. म्यूचुअल करता है, फंड्स. जिसके लिए वो लोग कुछ फी चार्ज करते For हैं थोड़ा सा. example, you want to invest in MRF, you want to invest in Nestle. These are very costly stocks. Yes. Right. You won't be able, I mean, people are able to, but for example, you have only 20K of capital, then you cannot buy MRF stock, है ना? Right. But you want to invest in it, then आप कैसे करोगे? So you invest in a pool investment. So उसमें क्या होगा? Everybody will contribute, and जितना money आपने contribute किया है उतने ही respect में आपको units मिलेंगे. इसमें आपको shares नहीं मिलते हैं. Because for example, even if you put 1000 money, तो आपका उतने basis पे divide हो जाएगा. 1000 would be divided into the portfolio which is there of the mutual fund. ठीक है. Now for example, आप let's open it now. See, वो लोग आपको क्लियरली बताएंगे कि let's say you are putting 100 rupees, okay, then out of 100 your 38 rupees would be into the financial services sector, 18 rupees would be into the IT, consumer goods में 8, इसमें इतना, and the company wise भी also आपको बताएंगे कि out of your 1000 rupees invested कितना कितना rupees इन्होंने किस किस stock में लगाया है, right? So in this way you can go through जो भी mutual fund में you want to invest. So this is mainly a pooled investment wherever you are not able. Yes. तो जो IDW करके रहता है वो क्या रहता है उसमें, अभी जो आपने दिया आप कैन यू प्लीज शेयर द प्रीवियस स्लाइड, मतलब जो SBI का दिखा रही थी वो एक्सिस बैंक ब्लू चिप का नेक्स्ट वन. Yeah. स्क्रॉल अप लिटिल. हाँ ये IDCW करके वो क्या रहता है उसमें. Regular IDCW and the direct. We can, I don't know what this, we can Google it. Wait, IDCW. Direct or indirect वाला ही है. Let me, but I'm not sure about this full form, so I'm opening.
सी वही है डायरेक्ट और रेगुलर वाला ओके सो इफ यू गो थ्रू द डायरेक्ट वन ओके so direct one में क्या होता है you can directly invest on your own but if you go through the agent one so there is one agent in between which will invest on behalf of you so when you select the mutual fund you will get the two options direct investing or the regular plan so you need to select the plan वही है अभी they have just changed the terminology Okay, yeah ma'am. Okay. okay now there comes the net asset value okay so as we just now discussed you get the units okay so total number of जैसे आप how do you come up to the market capitalization you come up to the market capitalization by multiplying total number of shares outstanding multiplying the present value of one particular stock very similar way here you get to the NAV okay so total number of units into the net asset value would lead you to the total money which is there under the asset management उसको AUM बोलते हैं asset under management okay so for example आपकी शेयर की प्राइसेस होती है यूनिट्स की NAVs होती हैं making sense मैम 10 ही होती है ना हमेशा मतलब जब स्टार्ट होती है generally yes 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 Ma'am, so we can say it's the face value for this mutual fund. हाँ yes yes yeah the next we have exchange traded funds so anybody what do you understand by ETFs Those which can be traded on the exchange is called exchange traded fund. so if mutual funds are tradable on the exchange they are I mean- ETFs yeah they are mutual funds only nothing new mutual funds generally they are not tradable but if they are tradable we would count them under the ETFs मैम okay तो क्या बेनिफिट होगा इसको ट्रेड करके liquidity no easy entry exit option would be there They are in demat account also. yes very similar to stocks for example stocks are tradable similarly your mutual funds are tradable yes ट्रेडेबल म्यूचुअल फंड को ETFs कहते हैं yes next we have the structured products okay so there are three types of shares which you have okay so what are the three types of shares the normal equity the differential voting rights and the preference shares okay anybody क्या होता है डिफरेंस तीनों में मैम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट वोटिंग राइट्स होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती है और प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जो मिलता है वो राइट होता है कि इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलेगा yes और जब कंपनी बंद होती रहती है तब अगर पैसा लौटाना हो तो Yes. पहले प्रेफरेंस वालों को जाएगा फिर इक्विटी का फिर नॉर्मल इक्विटी वालों को जाएगा yes एंड डिफरेंशियल वोटिंग मैम राइट्स में क्या डिफरेंस डिफरेंशियल के होता है पास वोटिंग राइट नहीं होती है डिफरेंशियल के पास वोटिंग राइट नहीं होती है नहीं होती है एक्सेस होती है मैम ये सो इट डिपेंड्स है ना उनके पास नॉर्मल 1:1 नहीं होता if you have normal equity so it is like 1:1 one share equivalent to the one voting right okay but जो differential हो क्या Please बोलिए but जो differential होता है उसमें there is x to y ratio if you have x number of shares for example you have 5 shares is to 1 okay it means once you have 5 shares in lieu of it you have only one voting right okay so 1:1 का रेशियो नहीं होता अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो 2 वोटिंग राइट्स है या 5 शेयर्स है तो 1 है डिपेंड्स की कंपनी का क्या रेशियो है ओके सो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नॉर्मल इक्विटी शेयर से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स बट मैम हमें कैसे पता चल मतलब कैसे रहता है कि प्रेफरेंस शेयर परचेस कर रहे हैं या लाइक क्लियरली मेंशन होता है उसमें मैम प्रेफरेंस शेयर ट्रेड होता भी है ज्यादातर तो इक्विटी होता है अभी नॉर्मली ओके मुझे बताओ किस किस कंपनी के डिफरेंशियल अभी है मार्केट में बताएं मुझे पहले मैम मैं तो पहले बार नाम ही सुना हूँ डिफरेंशियल शेयर का हाँ तो कोई बात नहीं जस्ट गूगल इट नो यू आर फ्री टू यूज एनी ओपन सोर्स टाटा मोटर्स का डिफरेंशियल शेयर्स है
यस, सो अभी सिर्फ एक कंपनी का है। अभी है या वो भी उन्होंने बंद कर दिया? है मेरे पोर्टफोलियो कंटिन्यू में है। ओके ओके या तो सिर्फ अभी टाटा मोटर्स का है, और उसमें भी रेशियो क्या है? वो मुझे नहीं पता, मैंने उतना नहीं किया। देखो देखो, फाइंड इट आउट। So see, only one company has the differential voting rights and it's clearly mentioned. So आप जो ले रहे हो, that is the normal equity, but when you buy this type of equity, so it will be clearly mentioned. ऐसा नहीं है कि you won't get to know. Okay. मैम इक्विटी और डिफरेंशियल में बस केवल वोटिंग राइट का डिफरेंस होता है ना, बस Equity and डिफरेंशियल शेयर जो होते हैं ना, हाँ उनमें हाँ केवल हाँ, वोटिंग राइट का। yes yes. और मैम प्रेफरेंस और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस होगा फिर? Preference is different. I mean, preference का तो it's in middle of pure equity and debt, no? So वो different है। उसमें rights का तो normal equity जैसे है, but in the case of liquidation debt जैसे है, so वो mix है। But इसमें और normal equity में it's completely the difference is in terms of voting rights. अच्छा, मतलब इक्विटी के पास नहीं है, डिफरेंशियल के पास पूरा पूरा, प्रेफरेंस नहीं बीच वाला है। इक्विटी के पास है, 1:1 है, 1 वोट इक्वल्स टू 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट है। बट डिफरेंशियल में इट विल डिपेंड कि कंपनी की क्या कंडीशंस हैं, रेशियो होगा उसमें। मैम इक्विटी के पास कहाँ होता है वोटिंग राइट, प्रेफरेंस के पास होता है ना? नो, यू हैव दैट राइट नो, जब एजीएम होता है तब आपको बुलाया जाता है, मेल आते हैं। यस मेल आते हैं। यस मैम 10% वोटिंग राइट है कंपेयर टू कॉमन स्टॉक। 10%, इट मींस 10 शेयर्स पे एक 10 वोटिंग राइट है। हाँ, ओके ओके। तभी उसका शेयर प्राइस लेस है कंपेयर टू द कॉमन स्टॉक। Yes. Okay, you tell me, why do companies come up with differential voting rights? मैम वो चीपर होते हैं वो शेयर्स, तो मैम टू नॉट डाइल्यूट द ओनरशिप। हाँ, कौन क्या बोल रहा था? चीपर होते हैं वो शेयर्स। ओनरशिप नहीं, not the cheaper one. Yes. ताकि ओनरशिप डाइल्यूट ना हो एंड वोटिंग राइट्स प्रमोटर्स के हाथ में ही रहे। Yes. मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए। इक्विटी भी है बाहर दिखाने Decentralized को, है। लिस्टेड भी है, एंड पावर भी उन्हीं के हाथ में। तो मम ये रिटेलर्स के लिए ही होते हैं ना, तो यस ये रिटेलर्स के लिए ही होते हैं, बट दे आर डोमिनेटेड बाय प्रमोटर्स ऐसे। नो सो सी, जैसे आप नॉर्मल इक्विटी बाय करते हो, यू विल बाय ऑन द वेरी सिमिलर वे। द ओनली डिफरेंस इज, सी इसमें इवन इफ one person objects anything, no, so management has to take into consideration even if the person has one single share, but in that there is one restriction which has been put by the company. When you have, for example, 10 shares, only one voting right would be there. So इससे क्या होगा, when they have to make major changes, so even though they are listed, but people won't be able to make much impact on the management decision. Okay. Yeah. मैम ये प्रैक्टिकल में ऐसे होता है कि केवल थ्योरी में है? बताया ना, टाटा मोटर्स के हैं ना। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे रिटेलर के वोटिंग राइट, तो वोट मैटर करता है या फिर बस ऐसे बोलने को होता है? No, yes, you object anything, they would consider your point. अच्छा। Yeah. So fully convertible, partially optionally, we have just studied. Okay, वही है। Now we have IDR, GDR and ADRs. क्या होते हैं? Anybody who would like to explain? Yes, guys, tell me. Any idea? Ma'am, shares of domestic company issued in foreign. Yes. So ADR में कहाँ listed होते हैं? अमेरिका। Yes, and GDR में? ग्लोबली।
Yes, yes. The only difference is if your Indian company, the Indian registered company gets listed in the US stock market, so वहां पे क्या होगा, वो लोग उसको बोलेंगे ADR, right? And if the Indian company is listed on any of the stock market other than USA, it would be GDR. But this is not like one share of India is equivalent to the one ADR. अब इसमें भी ये लोग क्लब कर देते हैं. अब कैसे क्लब करेंगे कि 5 इंडियन शेयर्स वुड बी इक्विवेलेंट टू द 1 ADR. इट मींस इंडिया के 5 शेयर को मिला के यूएसए का 1 ADR होगा. सो देयर पीपल वुड एक्चुअली बी बाइंग द 1 ADR मींस 5 इंडियन स्टॉक्स. सो इसका भी अगेन रेशियो होता है जो इजीली आपको मिल जाता है. सो यू हैव अ टास्क. What all companies are listed on the US stock exchange? You need to tell me with their ADR ratios. Tell me. Ma'am, HDFC Bank, Infosys. Ma'am, who takes the exchange risk then? I mean, Sorry? exchange का risk कौन लेता है? Exchange risk. Exchange risk means? Ma'am, if say Infosys is listed in ADR and in India as well. So Infosys share doesn't change in India, neither in US. But the dollar and rate exchange rate increases. So who bears this risk? The investors have to bear. क्यों change नहीं होगा अगर, see, if the exchange rate has increased or decreased, it means if it has changed, so it would be impacted in the stock prices also, no? Yeah. These are very sensitive to exchange rate. That's why the Indian companies have to hedge. वो currency hedging इसलिए ही करते हैं because of this fluctuations in the exchange rate. आप समझोगे what is hedging in the equity derivatives module, but that's why they do the currency hedging. अब मैम अगर कोई मतलब अमेरिका का स्टॉक हो इंडिया में लिस्ट हो जाए तो उसको आईडीआर कहेंगे. हाँ, and the reverse is IDR. The foreign मैम registered एडीआर को company. जैसे हमने कोई इंडियन स्टॉक है जो वहां पे लिस्टेड है एडीआर, तो हमने वहां खरीदा और यहाँ बेच दिया, ये ऐसे होता है? Arbitrage opportunity. हाँ. See, अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए. अगर आप वहां ट्रेड कर रहे हो आपकी वहां की सिटीजनशिप चाहिए. आपके पास दोनों सिटीजनशिप हो नहीं सकती. So either you have to trade through your friend's account or anybody else who has a citizenship of that country, because India doesn't allow dual citizenship, no? So legally तो आप नहीं कर सकते हो because of the rules, but if you have personal connections over there, तो हाँ ये trade possible है. और जनरली प्राइसेस कहाँ के हाई रहते हैं, यहाँ इंडिया के कि वहाँ के? See, हाई और लो का केस नहीं है यहाँ पे, पूरा खेल एक्सचेंज रेट का है. Right? Tell me what all companies are listed with their ADR ratios. सिर्फ कंपनीज का नेम मत बता देना मुझे. There would be Excel file which you will get. So वो Excel file download करो latest. Yes, मिली file. Did you get that ratio? मैम investing.com पे देख रहे, दिखी नहीं. हर चीज आपको investing.com से नहीं मिलेगी ना. So if you search these type of data, no, you will get to know many different sites.
So you should ideally be making the notes because you won't remember otherwise कि कौन सा क्या है. So a fun. इसको कौन सी वाली साइट पे देखें? पता नहीं, मैंने तो नहीं बताया अभी तक. That you have to tell me. I don't spoon feed you. मैम एक Yeah. पीडीएफ मिली है. Okay. उसमें क्या है डेटा? मैम शेयर कर दूं ग्रुप में? Yeah, you can share here also. Wait, I will give you the sharing rights. Yes, you can share it now. मैम एक एक्सेल मिली है. हाँ हाँ, पहले जो पीडीएफ मिली है यू शेयर. कौन थे? आई डिडंट सी योर नेम. मैम ग्रुप में शेयर कर दूं? शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है. ओके ओके, या नॉट एन इशू. May I share? Yes, yes. भाई कौन से साइट से मिल रही है? नहीं बताओगे आप? Not sure कि ये सही है या गलत, but this is the ADR list that I have. एडीआर यूके का कैसे? ओके दिखाओ, राइट साइड में जाइए. ये तो जीडीआर भी हैं. इसमें ADR भी है, वही मुझे दिख रहा है. ADR भी है, GDR भी है. Like we have रेशियो है HDFC, क्या? रेशियो है? Reliance. आई वांट दैट रेशियो. मैम आ है. सी जो आपने पीडीएफ सेंड की है ना, उसमें है रेशियो. मैम वो पीडीएफ में है, वो जो ग्रुप में आया है. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जो पीडीएफ है उसमें है रेशियो. सी you can see that 1:1, 1:1, 1:3, 1:10. Yes. So for example, Indian Hospitality Corp का क्या है? 10 Indian shares would make 1 ADR. Okay. ये कब की है पीडीएफ? Is it updated? I just need to check. आपने जहाँ से डाउनलोड किया है ना, कैन यू प्लीज कंफर्म कि ये कब की है? डेट मेंशन होगी क्या वहाँ पे? यस मैम, मैं ट्राई करता हूँ. या प्लीज, बिकॉज आई गेस ये पुराना है, मुझे ऐसा लग रहा है. काफी स्टॉक्स नहीं है अभी. ओके सी 23 जून 2010. पुराना है. नो इश्यूज, बट यू कैन, I mean, I just wanted to show you ऐसा ratios वाला है ना, you can get it. ठीक है? Your task is to find out the latest data. Okay? ठीक है. IDR तो कोई भी नहीं है. None of the foreign companies listed in India right now. पहले stand chart थी, but वो भी अभी currently नहीं है. Okay. Next we have foreign currency convertible bonds. Now foreign currency convertible bonds क्या होते हैं? You borrow but in the foreign currency from the international market. Okay, you don't borrow in the INR. Making sense? Yes ma'am. Equity linked debentures. Now in order to understand the equity linked debentures, you need to first of all understand the bond case. Okay, so I will just open up. Just give me 2 minutes.
हेलो Excuse me, ma'am. Ma'am is not. आ रही आवाज आ रही, मेरे को लगा मेरा नेट ही चला गया। No one is there. ये पीडीएफ भेजा हुआ है क्या अपने को? किसी ने चेक किया कल? कौन सा? जो पीडीएफ मैम पढ़ा रही है ना अभी, वो पीडीएफ ऑलरेडी भेजा है क्या? ड्राइव में। हाँ भेज दिया था हाँ उसमें ड्राइव जो भेज दिया। ड्राइव के लिंक में। हाँ ड्राइव की लिंक मिली थी। ओके। Can you see this Excel sheet? Yeah. Okay. So Ma'am, yes. ma'am, suppose a company share price changes in India. Mm-hmm. Does it ADR value also have to change? When the Its US market, value has been changed. if a company's stock price changes in India, Mm-hmm. does its AR Yeah, or yeah. ADR also have to change? Yeah, it does. So see, all these markets are very much interrelated. Okay, anything happens in US, it has impact on the Indian stock exchange. आपने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा था, इंडिया में कुछ भी नहीं था. None of the Indian companies were defaulted. कुछ भी नहीं था इंडिया में. But even though there was a huge impact on the Indian stock exchange, no? So क्यों हुआ? ऐसा तो है नहीं कि कुछ रिलेटेड है, दोनों इकोनॉमीज बहुत ही डिफरेंट है. बट स्टिल बिकॉज अवर इंटरनेशनल मार्केट्स आर रिलेटेड, तो इम्पैक्ट आता है. अभी जो कोविड का आया, अगर आज रात को डाउ जोन्स अगर नीचे होता है तो कल इंडियन मार्केट भी बेरिश होता है. सो इट हैज दैट साइकी कि इट इम्पैक्ट्स द इंडियन मार्केट. ओके, ठीक है. So this is the okay, now we will understand the bond payout. Okay, so in a bond, for example, the bond value is of 1,000. Okay, so today if you get one bond, it means you need to okay, so now if you buy one bond, you will get one bond and you have to pay for it. So how much money will go out of your pocket if you buy one bond? Can I say 1,000? Yes. Yes, if it is at par, अगर at par पे launch हुआ है, you get one bond and you have to pay 1,000 for it. Okay, so 1,000 rupees will go out of your pocket and you will get one bond. Now, अब जैसे आपको पता होगा बैंक में जब आप पैसा रखते हो, so you get interest on it. है ना, बैंक वाला बोलता है कि FD पे आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% मिलेगा. So similarly here it is the coupon rate. Okay. So if it is the 8%, then after completion of 1 year, how much coupon you will get? It would be 1,000 multiplied by the coupon rate. Yes. So how much interest you will gain? That is the 80 rupees. Similarly, in the second year also, you will get 80 rupees. In the third year also, you will get 80 rupees. Fourth year also, you will get 80. Fifth year also, you will get 80. And whatever the principal amount you had invested today, you will get it at the maturity. Okay, so if I have to say what is the maturity of the bond? 1400. No. Maturity isn't of years. Okay, so it is the अच्छा time. 5 years. Okay, so at the maturity, your principal amount is back with you. So in the fifth year, what is the total amount you would be getting in your pocket? 1,080. Okay, so if I have to add कि आपने at the end of fifth year आपने कितना कमाया, so what I will do, I will add up all the coupons
and the money which I am getting at the end of 5th year. So I will get 1400 rupees. And मैंने लगाया कितना था 1000 rupees. So 5 सालों में 1000 का कितना हो गया 14. So absolute gain मेरे पास कितना हुआ 400 rupees, and in terms of percentage it would be 40%, right? Now, for example, the current yield is 10%. Okay, so मैम what ये do you yield यही डिस्काउंट रेट है ना? अभी मैं आ रही हूँ उस पे. I haven't even started. Okay, just give me 2 minutes. Let me explain. So, what do you mean by yield? सबसे पहले तो, so generally the 10-year government bonds. Okay, so 10-year government bond rate means in terms of the interest rate, we consider it as a yield. So consider it as to be the 10%. Okay, so 10% is the rate, which is the bare minimum you can get into the Indian market. So according, risk-free rate, like yes, you can say it yes, as risk-free rate, absolutely, yes. So why to put this money idle for 4 years? Why to put this money idle for 3 years, for 2 years, and for 1 year? It is better to invest this coupons and gain more interest, no? So at what rate of interest you will again invest this coupon? So that you will do at the yield rate. So if I will do this money, so can I find the future value of this 80 rupees after 4 years? Can I? Why 4 years? so we are investing after 1 year, right? We are getting the 80 rupees after 1 year. मैम क्योंकि मैच्योरिटी 4 Total साल number of बाद year है. is 5 year, no? Yes, yes. So 80 का मेरे को at the end of, see, 1, 2, 3, 4. After 4 years, I will get 117. इसका मुझे कितना मिलेगा? Oh, sorry. मैम ये फॉर्मूला याद है आपको? Face value, sorry, future value है ना? So, okay, guys, how well are you in the Excel? नहीं आता मैम. Guys, you need to really practice upon your Excel skills because हाँ उसमें वो फिक्स करना पड़ेगा ना, so that मैम एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करके करेंगे ना ये सब चीजें? कैसे करना है मतलब कैलकुलेशन? ये नहीं पूछेगा एग्जाम में. हाँ, ये वाला नहीं आएगा. This is not the part of your curriculum. This is something additional which I am explaining it to you. But for the calculation purpose, you can. होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस Yes, होते हैं बहुत सारे. you can use calculator. Okay. न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं पर. नहीं 10-12 क्वेश्चंस तो होते हैं ना मैम एटलीस्ट. See, 7-8 depends. तो होते हैं मतलब. It depends. वो लोग कभी numerical ज्यादा दे देते हैं, कभी theory ज्यादा दे देते हैं. So there is no fixed pattern which they have. Okay. Ma'am, can we use financial calculators? Yeah, financial. Yes, I can. I mean, yes, you can. Right. Yes, yes. The yield part again. मैम कूपन रेट और यील्ड में डिफरेंस नहीं समझ आया. हाँ, so coupon rate is something which is fixed, है ना? कि आपको बैंक जब आप एफडी कराते हो तो आपको 6% जो बैंक बोलता है कि आपको 6% हर साल मिलेगा. Yes, so that is the thing. But yield keeps on changing. Suppose आज 10% है, जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचे तब सपोज करो ये 9% हो गया. जब आप थर्ड ईयर में मैम मतलब ये that is यील्ड the है क्या? 10-year government security interest rate. 10 years. Okay, मैंने आपको वही बोला सबसे पहले. इट इज अ 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट, जिसको अपन रिस्क फ्री रेट भी लेते हैं इंडियन मार्केट्स में. उसी के बेसिस पे सारे इंटरेस्ट रेट दे हैव द पर्टिकुलर फॉर्मूला जो डिपेंड करते रहते हैं. अच्छा कैपम मॉडल वाला जो होता है क्या? हाँ हाँ, कैपम वाले में जो आप रिस्क फ्री रेट लेते हो उसमें भी आप 10-year गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट ही लेते हो. पर यहाँ पे तो जैसे लॉस हो रहा है ना हमारा. हमको 10% तो रिस्क फ्री रेट है
और जो 8% का रिस्क हमने लिया उसका तो हाँ कोई हाँ बेनिफिट ही नहीं है। अरे wait I have just randomly taken it. I didn't इतना मैं दिमाग नहीं लगाया लिखने से पहले. I have just randomly taken. मतलब यील्ड जो होता है केवल कंपेयर करने के लिए होता है ना? क्या? यील्ड रेट जो है ये केवल कंपेयर करने के लिए होता है। This is for the reinvestment of your coupons. आप reinvest करंट मार्केट रेट पे ही कर सकते हो ना. अगर आपको अभी मार्केट में जो मिल रहा है उसी पे आप reinvest करोगे, नहीं तो आप किस तो रेट पे वी हैव द करोगे? ऑप्शन, नो, मतलब हमारे पास ऑप्शन होता है उसको री इन्वेस्ट करने का. Yes, see, because this is your money. This 120 which you are getting after the end of 1 year, after second year, third year, fourth year, this is your money, right? You can do What anything. is So why to coupon put it rate idle? and yield? Yes? What is the difference between coupon rate and yield? तो इसको री Coupon इन्वेस्ट. rate is the security rate, yield is the current market rate. अच्छा ओके, तो इसको री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? अरे I mean, वापस से कोई सिक्योरिटी में डाल दो पैसा, ओके, मतलब कोई इंटरेस्ट बॉन्ड हमारे. में डाल दो, हाँ कहीं पे भी डाल दो. ओके ओके, गॉट इट. Yeah. So these are the terminologies which you should understand. The face value of the bond, coupon, yield, maturity. अब see, अगर हमारे पास ये पैसा भी है, so if I do the summation of these, so this is the additional money which I can earn, no? So मेरे पास कितना आया था? इतना आया था. अगर मैं 467 मैंने राउंड फिगर ले लिया है कि अगर मैं इसको और कर देती हूँ, so मेरा जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा ना. See? म्यूचुअल फंड में उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, इतना जाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। This is the concept. Yeah. Ma'am, if the yield is 10%, then how in secondary got 18 rupees? How is? If the yield is 10%, 1000 face value, then how did he get 80 rupees in the second year? I अरे वो just मैम ने बाद में changed. चेंज कर I दिया just था। changed. ठीक है? So coupon rate will remain throughout the whole period. अभी we will discuss. When we will discuss कि coupon rate change हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं आपको वो भी बताऊंगी. पहले आप basic understanding ले लीजिए इसकी. Okay? Ma'am, can you please explain in live market like Bharat Bond currently trading? Okay. नहीं भाई, So पहले ये समझा लें दो फिर उस पे जाएं दो। yes, मैं आपको लाइव तब बताऊंगी ना when you understand the concept. अगर मैं आपको लाइव जाके yield, coupon, terminologies अगर मैं use करूंगी, it will be bounce for you, right? So I don't want you to get scared of the things. सबसे पहले understand the concept, how the bond market works, and then we will go on the practical thing. Okay? I will show you, don't worry. Is this part clear to everyone? Yes, ma'am. Bond wala. Ma'am, could you please repeat the last after the 1600? What is the After the calculation? 1600, okay, what I did कि ये जो money which we reinvested again, no, at the current market price, I did the addition of this. See, मैंने इन सबको plus कर दिया and okay, उस time just a second, I need to change. Wait, I will link it. हाँ, अब मैंने क्या किया जो अरे यार wait, हाँ, अब इससे क्या हुआ, जो पैसा पहले आपके पास आ रहा था, ओके, इट वाज ओनली 1100 1600। I did something wrong. 1600. Wait. हाँ, that's what I'm thinking. I didn't link, no, so manually. Wait. अरे मैम लिख देना 1600। ठीक है? So initially you were getting 1600 at the end of 5 years. What you can do is you can reinvest these coupons also. So on reinvesting, what you have earned is 612 rupees. So on adding it, now your total is 2212. Now I calculated what is
This is right. Now, what is your additional in the absolute terms? What is your gain in the absolute terms? That is the 1212, and in the percentage terms, it is more than 100%. Why more than 100%? Because you have reinvested your coupons also. If you would not have reinvested your coupons, so आपको 60% return ही मिलता. Actually, you have counted double. Like we are investing, we are getting 120 rupees on first year, and we are investing it, and we are getting Yes, yes. 175. So the 55 interest would be like our additional, right? Yes, 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 yes. That is So we have additional. the 55. We have you have summed up 120 for in मैम the ये हाँ 1600. थोड़ा गलत नहीं हो रहा, आपने 1200 मतलब 1600 में भी ऐड कर दिया, फिर बाद में भी ऐड And कर then दिया you 600. have to, yes. हाँ वही मैं भी You have to take the only the interest We part. have to take the difference. Yes, yes, Yes. हाँ You are right. Yes, I'm extremely sorry. Yes, we have to no just take the problem ma'am. difference. Okay, and now you can just take it. Yes. So वही सोच रही 100%. No, you are right. हाँ वही. Please explain. ओके सो उन्होंने जो बताया उनका पॉइंट बिल्कुल सही था. उन्होंने बताया कि आप 120 यहाँ पे भी इंक्लूड कर रहे हो, एंड जो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन की है सबमिशन में, वहां पे भी हमने 120 ले लिया है. बट दिस इज रॉन्ग. नो, यू कैन नॉट टेक one single figure at two different places. Either you can reinvest it or you can just take it. So if we have reinvested it, then what is our gain? So our gain is only the difference part. So यहाँ पे जो हमने additional sum up किया था, there we have just take the summation of the additional part, and hence we are getting the 73%. It means the almost 13% more gain we are getting by reinvesting our coupons. Okay, ma'am. Got it, ma'am. Yeah. Okay. मैम अच्छा एफडी में ऐसे कहाँ होता है कि मतलब आपने जैसे मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे 12% हर साल मिल रहा है, तो जो 12% मिलता है वो निकलता कहाँ है? वो तो उसी में जमा हो जाता है ना. हाँ, FD is very simple, no? If you compound it into the market, or if there is any security which does the compound interest, right? आपको FD पे तो simple interest मिलता है ना. आप जितना पैसा रखते हो उसी पे आपको मिलता है. So this is not the case of simple interest. Yes, these are the bonds. So there are bonds which have the option of reinvestment. So you need to check before buying a bond कि ये simple count होगा या मैम पर reinvest यहाँ होगा. पे तो ना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है ना कंपाउंड, यहाँ पे तो बीच का लग रहा है. This is completely different. This is a security which has the option of reinvestment. अच्छा. Yes, so this is just to under, yeah. मैम जो we can FDs कूपन रेट हम जो बात also कर रहे हैं, कूपन रेट की हम जो बात कर रहे हैं, वो एवरी ये जो इयर्स लिखे हुए 5 साल है ना, तो वो एवरी ईयर सेम ही चीज हमारे पास है जो स्टार्टिंग से है कि एवरी ईयर 120 एक्स्ट्रा आ रहा है? ये जरा मुझे समझा नहीं इसमें. आपको कैसे इंटरेस्ट मिलता है? अगर आपको 6% इंटरेस्ट, अगर आपने 100 रुपए की एफडी कराई है तो आपको 6 रुपए हर साल मिलेंगे ना. हाँ, ओके, राइट. वो वाला 120 है. ओके. मैम जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उसी वक्त ये होता है कि मतलब आप इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ, जब आप बॉन्ड खरीदोगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से क्लियरली मेंशन्ड होगा कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू एंड व्हाट ऑल नॉट. यस. ओनली प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल प्लस मैच्योर्ड अमाउंट, वो जो होता है वो तो आपको बैंकिंग बैंक सिक्योरिटी में लिखा होगा. हाँ, मैम ये थोड़ा वैसे वाला है क्या, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिलता है, फिर वही डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है. हाँ, ऐसे आप समझने के लिए समझ सकते हो. भाई वो म्यूचुअल फंड है, ये बॉन्ड्स है, डिफरेंट सिक्योरिटी है ना दोनों. अच्छा मैम, जैसे बॉन्ड का तो ऐसे होता है ना कि जैसे 800 का बॉन्ड है और मतलब उसकी मैच्योरिटी है 5 साल, तो इसका मतलब यही होता है ना कि मैं आज आपको 800 रुपए दूंगा और 5 साल बाद मुझे आप 1000 दोगे. मतलब आप दोगे मुझे ज्यादा ही 1600 2000, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर 1000 ही रहेगी. उस केस में क्या होता है, वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है. फेस वैल्यू अगर 1000 है और अगर आपने बॉन्ड खरीदा है 800 में, इट मीन्स द बॉन्ड इज बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज, राइट?
एंड आफ्टर द मेच्योरिटी उन्होंने क्या बोला है कि यू विल गेट जस्ट द फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट और एज ए इंटरेस्ट वाली चीज है। सी इसलिए मैं कह रही हूँ ना, वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड जब लिस्ट हुआ है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन कर रहे हैं कि एट पार यानी कि 1000 फेस वैल्यू है, उसी पे लॉन्च हुआ है और आपको उतना ही प्रिंसिपल मिलेगा, राइट। बट इफ यू सी प्रैक्टिकली तो कभी प्रीमियम पे लिस्ट होता है, कभी डिस्काउंट पे होता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। बट Yes, अभी ma'am. हम Yes, ma'am. As you say that in syllabus we have this topic, but there are some more rates are included, like nominal rate, inflation rate. These are included. I will take that part. I will take that part in the next weekend. I will explain it to you how the coupon rate changes तो इस बॉन्ड की शीट में क्या डिफरेंस आता है। Thank you. मैम अच्छा, यील्ड की जगह डिस्काउंट रेट होता तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। सी अगर आपका डिस्काउंट भी होगा तो भी करंट मार्केट प्राइस पे ही होगा ना, करंट मार्केट रेट पे ही होगा। करंट मार्केट रेट तो यील्ड ही है जो करंट मार्केट में चल रही है, हाँ है ना। तो रेट तो अच्छा आपको वही लेना पड़ेगा। अच्छा मैम, जैसे एक 1000 का बॉन्ड है, मतलब उसकी उसकी जो अभी मार्केट प्राइस है वो है 974.15। ओके ओके। ठीक, और तो मुझे 3 साल बाद वो बॉन्ड देगा 1150 रुपए, जिसका डिस्काउंट रेट है 6% और कूपन रेट है 5%। ओके तो इसका मतलब यही होता है ना कि आज मैं 974.15 रुपीज दूंगा तो मुझे 3 साल बाद 1150 मिलेगा, जिसकी परचेजिंग पावर 1000 ही रहेगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। और यहाँ पे जो आपने एग्जांपल दिया, इसमें ये हम लोग कैसे समझेंगे? जहाँ पे -1000 है, यहाँ पे आप 974 या जो भी वैल्यू है आप वो दोगे, है ना। हाँ और आपने हाँ कितना बताया, 6% कूपन रेट है ना आपका। हाँ, अरे हम तो लोग आप इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। वही है ना, वही है 120 की जगह आपको 66 रुपीज मिलेंगे, 60 रुपीज मिलेंगे। एंड हाँ आपको लास्ट में कितना बोला है उन्होंने, 50 50, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। मतलब अब यहाँ अब पे जो इसमें भी ये चेंजेस होते हैं, वेदर इट इज सेमी एनुअल पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट। अभी तो हमने सिर्फ एनुअल पेमेंट लिया है नहीं, ना। वो एनुअल वाला था, वो एनुअल था। ओके ओके ओके। अच्छा मैम, यहाँ पे जो ये अमाउंट आया है 1732.612, तो ये हमारा फ्यूचर अमाउंट है। इसकी परचेजिंग पावर जो है वो डिफरेंट रहेगी ना, हमें बस यहाँ पे परचेजिंग पावर नहीं पता है। हाँ सी, अब वो डिस्काउंट रेट जो आप बात करोगे प्रेजेंट वैल्यू में कितना होगा, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्काउंट रेट यानी कि जो करंट मार्केट रेट है, अगर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे तो फाइंड हो जाएगी, नॉट अ बिग तो डील। मैम डिस्काउंट और यील्ड एक ही होगा? हाँ हाँ हाँ, सेम करंट मार्केट रेट ही लेंगे ना। हाँ वही। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपको अलग अलग साल में मिल रहा है। हाँ वो अलग अलग साल वाला हाँ हो नहीं जा रहा नहीं, है थोड़ा सा। हम नहीं कैलकुलेट, यानी कि आपको इंडिविजुअली करके फिर एडिशन करना पड़ेगा, हो जाएगा बट वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस मैम। सो प्लीज आप एक बार गो थ्रू करिएगा इसको, है ना। बॉन्ड मार्केट को एक बार आप खुद भी स्टडी करिएगा, अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीकेंड, एंड देन वी विल बिल्ड अप अवर बेस ऑन द सेम। ओके, यस मैम। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। सो मैम एक या पर्सनल डाउट था। यस। मैम जैसे मैं भी 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, बोर्ड हुआ अभी, तो मेरे 85% रिजल्ट आए हैं। तो ओके मैम 85% में मुझे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, जनरल हूँ। तो ओके जो मुझे मिल रहा है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज एक बैंगलोर का है। ओके तो अब वहाँ पे ये सीन है कि जो मॉर्निंग बैच है उसकी फीस है 1,25,000 और जो इवनिंग बैच है उसकी फीस है 60,000। ओके और मेरा अल्टीमेट गोल जो है, मतलब बीकॉम में मुझे एफआरएम करना है, फिर बाद में सीएफए करूंगा। तो ओके मैं मतलब उन्होंने जो बताया, कॉलेज वाले जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि
केवल 2 घंटे कम पढ़ाते हैं इवनिंग में और बाकी सब फैकल्टी और बाकी सब चीज सेम है। तो मैम मैं इवनिंग बैच चूज कर लूँ ना फिर? सी वो 2 घंटे कम क्यों पढ़ा रहे हैं, आपने उसका रीजन पूछा उनसे? वो कहे कि फीस भी हम इस वजह से कम ले रहे हैं, पर कहे कि सिलेबस पूरा कवर करते हैं। हाँ, अगर सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं, जो भी स्टडी आइटम्स हैं, इफ दे आर कवरिंग एज अ होल, तो इशू की बात नहीं है, because then you can obviously concentrate on your FRM, right? So अगर course curriculum is same, if they are teaching all the things which are there in the morning batch, then you can take the evening batch, not an issue. But if there is any other difference, तो आप एक बार उनसे clearly confirm कर लीजिए कि what all are the differences which I will be getting in the morning and the evening batch. एक बार आप वो confirm कर लीजिए, so that it will be, you know, easier to take a decision कि ऐसा क्या changes है दोनों में। हाँ, मेरा भी एक डाउट है। Yeah. मैम, सो मैं अभी FRM कर रहा हूँ, सो आई क्लियर द फर्स्ट लेवल एंड मेरा अभी लाइक CFA करने का कुछ इंटेंशन नहीं है। सो मतलब ये इन दोनों मॉड्यूल से क्या मेरा लाइक वो जो गैप होता है जैसे मोस्टली एवरीवन इज डूइंग CFA एंड FRM टुगेदर, सो मतलब बिकॉज आई एम नॉट डूइंग CFA, सो इन दोनों मॉड्यूल से मेरा वो गैप फिल इन होगा? See, frankly speaking, this is not up to level of CFA, okay? Because CFA is very in-depth study. उसमें 3 levels हैं and it has a, you know, you need deep understanding of the concepts. So gap तो build up नहीं होगा, ठीक है? But ये है कि you would be industry ready if you want to get a job in the Indian market. So NISM certifications are well valid. ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्सेरा या यूडेमी से सर्टिफिकेशन ले रहे हो. दिस इज बाय द रेगुलेटर इटसेल्फ, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस एंड आपको एक यू नो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स वुड बी देयर इन CFA, whether you want to actually want to pursue the CFA or not, or FRM is the only thing which you ideally should be doing, right? So आपको वो एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज 2 मॉड्यूल्स। मैम आपको कुछ भी शेयर करना हो ना, ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, मतलब PDF हो कुछ भी होता है हमें मिलेगा। जो भी कोई अटेंड नहीं करेगा सेशन तो उससे रिकलेक्ट कर सकता है वो। अब कल आपने कुछ शेयर किया तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप जो भी शेयर करना हो। I have shared the Google Drive link, no, मैंने किसी को पर्सनली नहीं शेयर किया है। नहीं आपने जो no, I will be sharing on the Google Drive link only. Okay. Yeah. I just told this on the very first day itself. I will be sharing each and every document on Google Drive. मैम, तो कौन से पोस्ट के लिए कौन से पोस्ट के लिए मतलब सही रहेगा तो ये कर लेने के बाद? क्या लेने के बाद? I mean, NISM के ये जो सर्टिफिकेशन हम कर रहे हैं ना, अरे इससे कहाँ जॉब मिलेगी? किस काइंड की जॉब मिलेगी मैं यही जानना चाहता हूँ। Okay. नहीं मिलेगी for यार। example, see, this would make you a base. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी. Just by completing BCom and these certifications, I have seen people getting a job into the financial model, for example, as an analyst. Okay, so there are different level of analyst. I am not saying कि आपको topmost senior analyst की position मिल जाएगी, but as an associate or entry level analyst position, see, उनमें क्या चाहिए? You should have the financial knowledge. You should know how the securities market works. So mainly as a financial analyst or the junior business analyst roles, you can obviously focus upon. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, I have one doubt regarding this risk-free rate of return. Yeah. जस्ट लाइक मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड एनालिसिस के बारे में, तो उसमें जैसे कि शार्प रेशो कैलकुलेट करना है, तो उसमें तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? मतलब कैन आई शेयर माय स्क्रीन टू शो? Yeah, sure. I will just check whether you have the rights. You have the rights. Yes. Yes. So ma'am, just a second. Now it is visible. Yes, tell me. So these are my benchmark S&P BSE 100 TRI, which is
and these are my mutual funds for NAVs. NAV. Okay. मैम मैंने अकाउंट्स में जॉब करा और मुझे अभी एक करने के बाद फाइनेंस में, तो कैसा रहेगा उसको? एक मिनट, let me complete his query. Yes, go ahead. Just a second. आई थिंक मैम स्टॉप हो गया, हैंग हो गया। तो उसमें मुझे ये कहना था कि मैंने जो चार्ट पे जो कैलकुलेट किया था उसके लिए मैंने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके You लिए? can जैसे take 10-year government security rate as a risk-free return. बट मैम this is for weekly, no? So I doing calculation for annual basis. So what do I do in that case? या हर ईयर के 31 मार्च का कंसिडर करूँ या एवरेज निकालूं? फिर उस केस में क्या ऑप्शन रहेगा? एवरेज। ओके एवरेज फॉर 1 ईयर कैलकुलेट करूँ या फिर 10 ईयर का? आपने कब से लिया? आपने 2016 से लिया है ना? So 2016 1st of April 2016 to 1st of April, sorry 31st of March 2017 का आप एवरेज ले लो। ऐसे एक एक करके एक साल का बस एवरेज ले सकते हो। अभी शेयर हो रहा है वो एक्सेल शीट? यस यस यस। हाँ देखो, तो मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया है, बस यहाँ पे ये मैंने 31 मार्च का एंड का लिया है, तो यहाँ पे मैं एवरेज कर लूँ 30 ये इसका। आप क्या करिए, आपने 2016 से अभी तक का, आपने एक साल का लिया है ना, तो व्हाट यू विल बी डूइंग 1st of April 2016 to 31st of March 2017 का आप एवरेज कर लो। फॉर 10 इयर्स का या फिर 364 डेज ट्रेजरी बिल्स यील्ड? नो 10 years, टेक 10 years। नीचे वाला ये? हाँ। ओके तो मैंने मतलब ये गलत दिया था, तो ओके इसका वीकली एवरेज कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। वीकली एवरेज आपके पास डेटा डेली अवेलेबल है कि वीकली है? नहीं, ये ऐसे एनुअल डेटा तो नहीं आ रहा है, ऐसे वीकली आ रहा है, वीकली चेंज हो रहा है ना ये यील्ड की प्राइस। तो कोई बात नहीं, आप वीकली का एवरेज ले लीजिए। ओके वीकली एवरेज कंसीडर करूंगा। ओके then I will get this calculation also. Yeah. Okay, if you have any other doubt, you let me know next weekend, okay? मैम बस एक छोटा सा कि अगर या मैम मॉर्निंग और इवनिंग बैच में जब मुझे पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको रीच कैसे करूंगा? You can text me in the group itself, yeah? Or we can discuss the next weekend, because next weekend classes will be there. At that time we can discuss. अरे मैम बहुत लेट हो जाएगा, वो लोग कह रहे हैं कि इवनिंग में सीट ज्यादा है नहीं। Okay, then you can text it in the group itself. I will answer you there. Okay? अच्छा, आप ग्रुप में हैं व्हाट्सएप वाले? Yeah, I am there. अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, so we will meet up next weekend and I'll be sharing the link for the same, okay? Yes, ma'am. Okay, thank you guys. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye.